नमस्ते बच्चों। आज हम और एक नए पाठ के साथ में यहाँ पर आए हैं जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि, जिसको लिखा है शरद जोशी ने। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके घर में अतिथि नहीं आते होंगे, है ना। जहाँ पर घर है, सगे संबंधी है, रिलेटिव्स है, उसमें क्या होगा, अतिथि तो आना ही है। कौन आएगा यहाँ पर, अतिथि आना ही आना है। अब अतिथि जब आते हैं तो बताते नहीं है, जिसके घर में जाते हैं ना उनको बताते नहीं है, इसलिए अतिथि यानी समय की जानकारी। यहाँ पर तिथि का मतलब क्या है, समय। समय की जानकारी न देते हुए आने वाले जो व्यक्ति है उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं, मेहमान कहते हैं। अभी क्या हो गया है, मोबाइल फोन आ गया है, लैपटॉप, कंप्यूटर, ईमेल, मैसेजेस, ये अगर आना है हम लोगों को तो हम अपने परिवार वालों को या जिसके घर हमें जाना है उन्हें हम क्या करते हैं कि भाई ये तारीख को हम आ रहे हैं, तो वो अलर्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। मगर यहाँ पर ये जो पाठ यहाँ पर दिया गया है, शरद जोशी ने जो लिखा है पाठ अतिथि के बारे में, ये बिन बुलाए मेहमान है। विदाउट कॉलिंग दे आर गोइंग देयर, करेक्ट। सो इवन द फैमिली पीपल डोंट नो देयर हु इज गोइंग टू कम देयर। अतिथि जब आते हैं, when they are going to everybody's home there, no, the situation, if one day they are staying there, no problem, एक दिन अगर रुक रहे तो कोई बात नहीं, अच्छे से खाना वाना हम लोग उनके लिए पकाते हैं। समझो हम एक सब्जी खा रहे हैं, है ना, जब अतिथि आएंगे तो 2 या 3 सब्जियां बनाए जाते हैं, अच्छा भोजन। जनरली वॉट एवर वी आर टेकिंग एट लंच, more than that best food we will provide for them. But when the guest is staying for one day, है कि नहीं, उससे ज्यादा अगर वो रुक रहा है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, so the quality of food is decreasing there. The quality of food is decreasing there. Why? Because whatever monthly plan is there, no, family members, whomever in the family, whatever 10,000 or 15,000 salary is there per month, so father and mother what they will do there, 5,000 rupees for son's fees, correct, 5,000 rupees for grocery and other things, and 5,000 are there, 3,000 for clothes and 2,000 for remaining maintenance, correct. So they already plan there, correct. इन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया, मगर प्लान में ये अतिथि का आना नहीं है। द गेस्ट इज नॉट इंक्लूड देयर इन देयर प्लान, करेक्ट। सो व्हेन द गेस्ट कम्स विदाउट इन्फॉर्मिंग व्हाट इज हैपनिंग देयर, द मेंटेनेंस इज गोइंग टू कोलैप्स नाउ। ये जो घर का जो योजना की है, प्लान किया है, घर को कैसे चलाना है, ये टोटली क्या हो जाता है, पूरा बिगड़ जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही शरद जोशी के घर में एक मेहमान आता है और वो जाने का नाम ही नहीं लेता है ना, इसलिए इसके मुंह से निकल जाता है अतिथि तुम कब जाओगे, ओ गेस्ट when will you go. If more than 1 day or 2 days anybody is staying there, your maintenance will collapse there, and suddenly one question will come out from your mouth, that is, oh guest, when will you go from here. So let us see there how Sharad Joshi has written here the story तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि केम ऑलरेडी एंड इट इज अ 4th डेज, चौथा दिन है यह, इट इज अ 4th डेज। सो दिस गाइज आर देयर, नो, मदर फादर, माँ है या पिताजी है, माँ पिताजी या शरद जोशी जो है इनकी पत्नी, इनमें झगड़े हो जाते हैं। दे विल स्टार्ट टू फाइट देयर, व्हाई दिस गेस्ट इज नॉट गोइंग देयर and our maintenance is going to collapse now. So it is the 4th day, but this Atithi came here, no, he is not ready to move from there, and one question is coming there from Sharad Joshi's mouth, that is what, तुम कब जाओगे अतिथि।
Oh guest, when will you go from here? Now this question is there, no? He is not openly saying there. मुंह खोल कर नहीं बोल रहा है, in his mind only. When will you go? Like this, in his mind only. So what types of expression and behavior will be changed here? So let us see there. हमारे बर्ताव में कैसे परिवर्तन आ जाता है जब मेहमान ज्यादा दिन रहने लगता है, तो आइए देखते हैं। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगारेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। नाउ शरद जोशी इज टेलिंग टू द गेस्ट केम देयर ऑलरेडी एंड इट इज द 4th डे। 4 दिन हो गए। नाउ ही इज टेलिंग, शरद जोशी इज टेलिंग टू गेस्ट, ओ डू यू नो वेयर यू आर सिटिंग देयर इन दिस रूम? ओके, हियर यू सैट देयर, करेक्ट? Here you sat there and smoking here. Okay, here one calendar also is there in front of you. What is there? Calendar also is there. Don't you know the calendar also we can change every month? Weekly the days also will be changed, correct? Suppose today is Monday, tomorrow will be Tuesday, but you came to our home and not ready to move from there. Just you see there where you sat now in that room where you are enjoying smoking here, in front of you what is there? Calendar is there and you are smoking. जहां पर तुम बैठे और बीड़ी पी रहे हो, धुआं छोड़ रहे हो, उसके सामने क्या है? कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा से नम्रता से फड़फड़ाती रही है। नाउ इन दिस रूम when the fan is rotating, when the fan is on, what will happen there? The calendar's lips will be flutter, correct or not? Sound will come there, correct? तो ये फड़फड़ा रहे हैं, कैलेंडर के जो पेज जो है पंखे से क्या हो रहे? फड़फड़ा रहे हैं। और ये जो अतिथि ही सिगारेट मुंह में ले लिए है, मजा ले रहा है कि नहीं? So Sharad Joshi is telling there, don't you see the calendar's lips are fluttering here, shaking there? It is telling that my date yesterday it was 1, today 2, tomorrow will be 3. The date is changing there, but you are not changing. You came here, it is your 4th day and not ready to move from here. Then again, how many days you will be here? Now this is speaking there, no, Sharad Joshi, writer is speaking there in his mind. Openly he is not saying anything to the guest. Everything is happening in mind. इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाता रहती है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीख बदल रहा हूं। Now you see there, whenever the guest will be here, no, Sharad Joshi will come there. In front of him, he will change the date. Oh, today is 1, he will cross there. Correct? Tomorrow 2. That means he wanted to indicate, oh, you are staying here, it is the 4th day. Even the date is changing there, but you are not ready to move from here. So how long you are going to stay here? Correct or not? But this everything he is discussing there in his mind only. तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह 4था दिन है, in his mind only he is repeating now. Sharad Joshi to him, what? Do you know? You are staying, it is the 4th day. यह 4था दिन है तुम्हारे रहने का। तुम्हारे सतेत आतिथ्य का 4था भारी दिन पर तुम्हारे जाने का कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। It is the 4th day, but you are not ready to move from here. Why don't you understand? Our condition is not good. हमारी जो परिस्थिति है बहुत ही कमजोर है। जितना भी पगार हमें मिलता है, already we have planned it how to spend this money. In between you came there, and that is also one day you have to stay and move there. Everything he is murmuring there in his mouth only. He is not opening his mouth and saying. Who? Sharad Joshi. But he wanted to say everything to the guest. It is your 4th day. See, my bank balance and everything is going to collapse now. But you
still you are staying here, you are not ready to move from here. तुम यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। द एग्जाम्पल शरद जोशी इज गिविंग देयर, व्हेन द फर्स्ट पर्सन वेंट ऑन मून, हु? नील आर्मस्ट्रांग, है ना। सो शरद जोशी इज गिविंग द एग्जाम्पल, सी व्हेन नील आर्मस्ट्रांग went on moon there, they also didn't stay 4 days on the moon, but you have come here and not ready to move from here, please. In his mind only he is saying there, please go from here as soon as possible before I get angry. मुझे क्रोध आने से पहले तुम्हें यहां से क्या करना है? निकल जाना है। Don't see my limit there. But this everything he is speaking in his mind only. The words are not coming from his mouth. In his mind only he is murmuring there. He is changing the calendar. The guest is here and he is cutting, changing the date, everything. And he has given the example also. चांद पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग जो है वो भी 4 दिन तक नहीं रुके थे यहाँ पर चांद पर. But you, it is the 4th day, still you do not understand how long you are going to stay here. There are so many questions were coming in writer's mind. जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर में आए हो, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके। अब तुम लौट जाओ अतिथि, अब तुम लौट जाओ। ओके, यू केम देयर, यू स्टेड हियर, योर फुटप्रिंट्स आर देयर नाउ. व्हेन यू केम दैट टाइम ओनली आई गॉट द इंप्रेशन. योर foot impression is there now, that I got it there. Then again, how much time, how much soil you want to dig from my home? Indirectly he is speaking in his mind, he is murmuring. शरद जोशी, आखिर तू कब जाओगे? It's not one day, second day or third day, it is the 4th day you are staying here. My bank balance, everything gone down there. Correct. अतिथि तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है. इन हिज माइंड ओनली शरद जोशी इज मर्मरिंग देयर, इट इज द लास्ट टाइम नाउ. इफ टुडे यू आर नॉट गोइंग देयर, आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे. आई मे लूज माय concentration, temper or anything. I can do anything. I can take your hand and pull you from my home. But this every action he is telling in his mind only. He is not opening his mouth. He is getting angry there again. How long you are going to stay? So it is the last seema, border. If more than this, 5th day, if you will stay there now, I don't know what I am going to do with you. तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय है. In his mind he is telling there, oh guest, it is the correct time. You have to move from here now. You cannot stay more here. High time है. क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? He is asking in a different way in his mind only. Don't you have your family or anything? Prithvi means what? Earth. Only my house is there to stay here. Your family, wife, children, anything, whether they are not calling you, then how long? How long you will be here? और कितने दिन तक रहोगे? उस दिन जब तुम आए थे. This is the introduction now. Okay. So 4th days were there and he is going to lose his temper there. Who? Sharad Joshi. And he is telling to the guest there, it is the last time. Okay, more than this I cannot bear that. If 5th day you will stay here, no, I don't know what I am going to do with you. Okay, now from starting he is going to explain there now. It is the introduction. How did guest came and how many days he is going to stay there. How, what plan they are doing there. How can he move from here? So let us see from first day now. उस दिन जब तुम आए थे, the first day, the very first day when you came here, correct?
जब पहले दिन तुम आए थे तो क्या हुआ? मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा। इन माई हार्ट वन बेल रिंग। ओके, ओ माई गॉड, ही केम नाउ। ये यहां पर आ गया है। अब कितने दिन तक न जाने रहेगा, हाउ लॉन्ग ही इज गोइंग टू स्टे देयर। वेरी फर्स्ट डे ओनली माई हार्ट बीट्स टोल्ड मी, oh, this person came there, and that is also without informing, without telling. इसी का मतलब क्या है? अतिथि. Those who are not telling and coming to your home, that is called अतिथि. So I got a doubt there. Oh my God, he came there now. I don't know where he is going to move. अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप रहा था. In my pants pocket, I have money pocket. It started shaking. मेरा बटुआ कांप रहा था. Oh, how much balance is there now? Now this balance is going to reduce because of Atithi, guest. Because generally whatever we are eating there now, when the guest will come there, we want to make satisfied to the guest there. Normal dinner we are taking there, but when the guest will come there, we will prepare dal, rice, chapati, what various types of food we are preparing. Why? Because we are thinking that he will eat today, tomorrow morning, and he can move there. So one day it's okay there, correct? But already this salary, how much came there now? That everything they planned there. So his money pocket is there now. Started shaking to when it saw the guest. उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था. Now you see there, first day when he came there, no, he came to, in his mind he was thinking there, oh, why did he come there? But how can he say there? He smiled there. He welcomed the guest. Okay, welcome. They hugged. Both each other they hugged, correct? And he welcomed him. Please welcome to my home. Indirectly, he didn't want to welcome him, but how can he say there, why did you come? So उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी. माई वाइफ वेलकम यू, नमस्ते जी, ऐसे करके उसने भी. मगर उसके दिमाग में भी कुछ ना कुछ तो चल रहा था. अरे ये आ गया है, अभी कब जाएगा पता नहीं. ही केम नाउ, बट orally the formality they completed there. Namaste, please welcome to our home there. Then तुम्हारे सम्मान में वो अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया. Now you see there, every day normally what they were eating there, no, the level of dinner suddenly they increased there. Okay, ये दाल चावल रोटी जितना भी था, इससे 4-5 पकवान बना लिए, अचार बना लिया, पिकल्स, कर्ड, whatever it is, idli, dosa, sambar, all types of food they prepare there. So that means they are paying extra money now. They are spending extra money, but already they planned before only what salary they got it there. 1 month they have to continue with this money. But when suddenly the guests are coming there, the position will be very difficult to run the family. So they increase the level of their food, because after eating, when the guests are coming there, and after eating, they should say, oh, your brother is there now. They took my hospitality properly. They made me happy, like that. Then तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जी और रावते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था. He is telling there, 2 vegetables were there that day, first day, and raita means what? Pickle, and मीठा भी बनाया था. Maybe jalebi or laddu also they prepare for this. इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी. Why they are preparing this many types of food? Do you know? Behind this, their wish is there. Oh, he will eat today, and tomorrow morning he can move from here. Correct. But here the guest is not ready to move from here. आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे. They thought there, today you will eat this delicious food, and
tomorrow morning by the train you can go there and you will inform to your relative, oh, when I went to Sharad Joshi's home now, oh, what a hospitality he did for me, कितने अच्छे से मेरे साथ बर्ताव किया. You will go and say there, but you are not ready to move from here, so it's not good. जब भी अतिथि आता है तो उसे क्या करना है, 1 या 2 दिन में निकल जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, परिवार वालों का जो मेंटेनेंस होता है वो सब कुछ बिगड़ जाता है कि नहीं. तुम भी कभी जाओ किसी के घर में मेहमान के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, उसके ज्यादा नहीं रुकना है. बाकी का बाद में देखते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.